Perfect. Hey everyone, it's been a while. The last time I posted a vlog was 2 weeks back, तो काफ़ी टाइम हो गया. बीच में मैंने vlog किया था, but honestly एक proper vlog बन नहीं पाया. But wishing you all a very happy new year. I hope you started this new year with lots of happiness, lots of positive energy, and yeah. Last week of 2025 was incredible for me. जो मुझे vlog करना था, but एक proper vlog नहीं बन पाया. But I will still compile and recap the week quickly here. सो 26 दिसंबर को मैं अपने क्यूबिंग वाले फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया था एंड उसमें भी आई एंडेड अप क्यूबिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन. वी हैड गुड फूड, वी हैड अ बॉन फायर एंड आई ऑल्सो मेट सम न्यू पीपल हु वर नॉन क्यूबर्स एंड वो लोग भी बहुत चिल थे. इट वॉज अ वेरी फन डे. देन द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द मॉथ कॉन्सर्ट ऑन बेयरली एनी स्लीप विद some people you've already seen in the vlogs. Satvik, Abhay, Aniket, Nishtha, all of those guys, Punya. बहुत मज़े आए थे उस दिन भी. That was my first proper concert and honestly had a blast. Then 31st, which is New Year's Eve, मैंने अपने घर पे ही हाउस पार्टी होस्ट करी थी. यहाँ पे जहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहीं पे बॉन फायर हुई थी एंड वी हैड लॉट्स ऑफ गुड फूड, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी प्लेड गिटार, हमने गाने गाए, पूरी रात हम जागे. लियो ने भी बहुत मस्ती करी हमारे साथ. सो इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस वीकेंड of the year, not weekend, last week of the year. My hair looks absolutely terrible because I need to wash it. बहुत ज़्यादा oily है. But anyway, coming to today. Today is 5th of January. First week of January went by pretty quick actually. ख़त्म होने वाला है. Yesterday I had an exam for which I had to go to Jaipur and कल ही मैं वापस आ गया. I went with my mom. She saw a few places in Jaipur जब तक मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था and then I came back home with her. Now coming back to my regular routine. जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तब से मैं रेगुलर रूटीन में ही हूँ. उससे पहले भी जो मैं कर रहा था वही मैंने कंटिन्यू किया है. Hence the title of this video would be New Year, Same Routine या Same Old Me because I wanted to enter 2026 exactly the way I did. So आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आज की बात करते हैं आज क्या करना है. आई वोक अप अ फ्यू आवर्स बैक. आई हैड अ वेरी गुड स्लीप. आई स्लेप्ट वेरी लेट बिकॉज आई केम बैक होम लेट फ्रॉम जयपुर एंड देन आई वोक अप प्रीटी क्लोज टू 12 एंड देन उसके बाद उठा, मैंने खाया पिया. नाउ हैविंग माई कॉफ़ी बिफोर आई हेड टू द जिम. आज मुझे जिम में ट्रेन करनी है लेग्स और मैं कभी भी व्लॉग्स में लेग्स ट्रेन करते हुए नहीं दिखाता. इसका बड़ा रीज़न ये है कि आई एम वेरी वेरी इनसिक्योर ऑफ माई लोअर बॉडी. Ever since I was a fat kid, I did not really store a lot of fat in my upper body. I had fat in my upper body, but lower body stores the maximum amount of fat, and I am super insecure about it. Going into this new year, I am not as insecure I was last year because I think मैं पहले से lean भी हुआ हूँ. But it is still something which I absolutely don't like showing in my vlogs. आज मैं जिम जाके पता नहीं ढंग से vlog करूँगा कि नहीं करूँगा legs को. And let me get Leo because he's barking from there. Leo, guys, ignore the clothes in the back, but ये आ गया है मेरे पास चिरकुट. I know everyone has some sort of insecurity or insecurities, but never thought I would say my biggest insecurity in front of a camera, and this will be going on YouTube, so everyone who watches this vlog will know. But the only reason I was hesitant to say this on camera is because I have been body shamed because of this a lot of times. To the people I discussed my insecurities with, उन्होंने भी body shame करा कुछ time बाद. But at this point I don't care because I'm working on it and this is my way of getting rid of that insecurity. Just putting it out there and never thinking about it from here. Not exactly never thinking about it, but if it's something I'm working towards, I don't think I should be really afraid of getting bullied or something. So I'm proud of how far I've come from the last year to this year. Gym के बाद I'm supposed to give a couple of cubing sessions like usual. So जल्दी gym निपटाएंगे, वापस आएंगे. I'll walk him, eat something and get to work. Quickly finishing off this coffee and heading to the gym. बाय द वे गाइस, ये मेरा ट्रैक वाला बैग है जिसे मैं आजकल जिम लेके जाता हूँ बिकॉज उसमें सब फिट हो जाता है यार. ट्राईपॉड, पानी की बॉटल, मेरे जिम स्ट्रैप्स, मेरा एनी टाइम का कार्ड इसमें कहीं तो है. तो या दिस इज़ अ वेरी नाइस बैग. So guys, I've left for the gym. मुझे लेग्स ट्रेन करने में थोड़ा सा डर लग रहा है आज बिकॉज मैंने 1.5 हफ्ते से लेग्स नहीं करी ऑलमोस्ट. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम द कॉन्सर्ट आई थिंक आई जम्प्ड वे टू मच. मेरे नीज़ में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है रैंडमली. लाइक आई एम वॉकिंग राइट नाउ, आई एम ऑल गुड. आई टेक अ टर्न एंड देन सडनली हल्का सा पेन होता है, शार्प सा, एंड देन आई फील नॉर्मल. आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई डोंट फील एनीथिंग और एकदम से मेरे पैर में दर्द होगा नीज़ में. सो आई डोंट नो व्हाट्स अप विद दैट. किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना. बट आई एम रिस्किंग
a leg day today, and we'll find out if it's something serious or not. So let's go. So I started warming up with the lightest weight and it felt pretty decent on my knees. कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने weight add कर दिया. And this is my top set 70 for 6 Smith machine पे. Have been doing Smith machine squats only for the past 2 months and it is going pretty well in my opinion. So ये set होने के बाद मैंने start किया stiff leg deadlift. This is the first time I did 120s for reps and I got 6 reps. And it felt really good on my hamstrings, so मज़ा आया ये करके बहुत. Then I moved to leg extensions. I did 96 kgs for 8 reps here and पूरी जान लगा दी मैंने सारे सेट्स में अपने तीनों leg extension के सेट्स में. And I finished off with hamstring curls. All in all मेरी knees में कोई दिक्कत नहीं हुई, so I'm really happy about it. Solid leg day. Guys, workout is done. Now I'm heading back home. I have to get back home real quick क्योंकि लियो को भी walk करानी पड़ेगी before I sit down for taking all the cubing sessions. So let's run back home. कल लेके आऊँगा बिस्किट्स. बाय बाय. अबे आराम से लियो. So I just got done with the first session. My hair is a mess right now. Ignoring that, the session went great. I am teaching this kid who is improving like crazy. We started at around 25, 24 seconds and he's now come down to 18, 19 within a few weeks. And my goal is to get him to sub 10 by the middle of this year, which is very, very possible. So it's been fun teaching these students, these kids. Guys, I'm making some chai right now, but I'll circle back to the thing I was talking about earlier in the day about insecurities. 1 minute देना बस. चाय की सारी सामग्री डल चुकी है पैन में. अब इसके बाद दूध डलेगा and then chai will be ready. Talking about insecurities, मैंने डिस्कस किया and मैं वही बॉडी पार्ट को ट्रेन करने गया था जिम में and I felt more confident today. मैंने आज भरे जिम में पहली बार रिकॉर्ड करा खुद को, सारे सेट्स रिकॉर्ड करे और सारी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करी, which felt pretty good. I think since I am like letting it out there, the insecurity, I feel more confident. And I think if something can be changed, then I feel like there's no point in being insecure about it. Instead, it's better to work towards improving it. One more thing I'm very insecure about is my hair, because my hair is very thin and I'm losing it, mostly because I had a very stressful year last year. And apart from that, my diet was not good. But I started eating better for that, and I think my hair is starting to look better. So I have a lot of insecurities which I'm trying to improve this year. But if something can't be improved, then I am not worrying about it. Another thing I have been made insecure about is my nose, because it's kind of pointy from here. तो वो भी अब मैं कुछ नहीं कर सकता. तो I have come to accept it, and I feel like it's not bad. I am saying these things out loud in front of a camera because I feel like a lot of us have insecurities which should not be something we should be insecure about, right? But at the same time, people have made us to believe that we should be feeling insecure about it. So if it's something that you can work and improve, do it. I think you should absolutely do it. If I had never lost the weight, I don't think I would be confident at all. मैं बहुत चीज़ें नहीं कर पाता लाइफ में, and वो भी एक insecurity थी एक point पे. So I think working towards it is very, very important. But something like this, which I've been given by God, I'm happy to have this feature on my body, on my face. So again, be positive, work towards something you can, and if it's something that is not in your control, fuck it. Okay, now in goes the milk. Shit, मैंने गिरा दिया बाहर वीडियो के चक्कर में, मम्मी मारेंगी भाई. Also, this jacket is giving me so much nostalgia because इसी jacket में मैं nationals जीता था. तो this is a very core memory वाली jacket which I'll probably keep forever, even though I don't really wear it that often. इतनी ठंड है नहीं यहाँ पे दिल्ली में, but still, I'm in Noida by the way, not Delhi. I still can't get used to the fact that I'm living in Noida. But anyway, love this jacket. पापा, भाई, मैं.
तेरे को भी चाय पीनी है? बेस्ट डील मिलेगी। और क्या बढ़िया है ना। हाँ यार, स्कैच कैनडा। तो मेरा डॉग ने ऐसे हाथ से खाना आता है। लियो मुँह खोलो, मुँह खोलो। यार ये दूसरा हाथ के बिना खाएगा नहीं। इधर आओ, इधर करो मुँह। खाओ। Of solutions. Instead, try doing the same thing in your mind. Hi. लियो ये क्या किया है? मैं इसको वॉक पे लेके गया और ये नीचे से किसी रैंडम टॉय को उठा के लेके आ गया और इसकी वाट लगा दी अच्छे से। ये क्या किया है? क्या किया ये क्या आके दिखा रहा हो तुम मेरे को? गिल्टी आइज मोटू। 10 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स एके अंडा भुर्जी। गाइस दिस वाज माय लास्ट रिव्यू ऑफ द डे। मैंने सबके सॉल्व्स देख लिए, सबको फीडबैक दे दिया है एंड नाउ आई एम हेला टायर्ड। इसको मैंने वॉक करा दी थी 2 बारी। पहली बार में इसने पॉटी नहीं करी थी, सेकंड टाइम में इससे कर ली थी। अब ये सोएगा आराम से, मुझे बिना डिस्टर्ब करे। Hopefully you could relate to the things I talked about in this vlog. I know it was very personal for me to share all of this, but I feel like it's time that I move on from thinking about the things which I can't control and working on the things I can control and accept myself and love myself. I think that is what had been missing in the past few years of my life. Self-doubt, self-esteem गिरे रहना because of just all of this. But now I've come to love the things that used to be a big insecurity of mine. So hopefully you could do the same this year. Hopefully you could relate to this video, the things I said. And yeah, catch you guys in the next vlog and I hope you guys enjoyed this one. और vlogs आते रहेंगे. I know this was a huge gap between the last vlog and this one, but अब थोड़ा consistency वापस आएगी. So stay tuned, subscribe to this channel and see you in the next video.